So we are in the discussion of hemorrhoids. For the hemorrhoid, there are many protocols. Khemkaji has given very wonderful protocol. Single protocol where the combining many other points. So we'll discuss that because that protocol is really very effective. तो अभी हम एक ऐसे प्रोटोकॉल की बात करेंगे जो बहुत प्रभावकारी है, जो कई पॉइंट प्रोटोकॉल की चर्निंग करके बनाया गया। बहुत सारे अलग अलग प्रोटोकॉल दिए थे, कोई ब्रीडिंग कम करेगा, कोई ऊर्जा को उठाएगा, कोई दर्द दूर करेगा, उन सबको मिलाकर फिर एक प्रोटोकॉल का निर्माण किया गया है। सो विल बी डिस्कसिंग दैट प्रोटोकॉल. Before discussing that protocol, I would like to tell you one thing, that empirical point of the hemorrhoid. Empirical point का मतलब है ऐसे बिंदु जिनका प्रयोग हम सदियों से करते आए हैं हेमरॉइड के लिए. So empirical point of hemorrhoid. Which are the empirical point of hemorrhoid? I will show you in the image. You already know this, but still I will show you. There are 2 points has been considered as the empirical point of the hemorrhoid because these 2 points are very much effective. बहुत ही प्रभावकारी हैं ये 2 बिंदु. आप इस सिर्फ इन 2 बिंदुओं को लगा देते हैं तो भी कुछ फायदा मिल जाता है. The point number 1 is urinary bladder 57. That is the empirical point of hemorrhoid. Urinary bladder 57. Single point. Then one more point we'll discuss. On the calf muscle, where the belly of the calf muscle is ending, at the ending of this point is located, हमारी काफ मसल की बेली जहां पर खत्म होती है ना, लगभग हमारे पैरों के लगभग बीच में थोड़ा सा ये बिंदु पाया जाता है. ये देखिए जहां पर हमारी काफ मसल की बेली खत्म होती है. So this is the urinary bladder 57. We can see the calf muscle. If we contract the calf muscle, then we can find at the lower ending. This is the empirical point of the hemorrhoid. So now the next point is bladder 58. That is also the empirical point of hemorrhoid. So 2 points are the empirical point of hemorrhoid. Now we are going on the side. ये ऊपर का पॉइंट 57, नीचे का 58, ये साइड में है. So from the urinary bladder 60, we are measuring the one chun. This point is located near one chun down from the 57. So distance between 57 and 58 near one chun, but the 57 is a little lateral. ये थोड़ा सा lateral side. We can see here the location of both the point here. आप दोनों पॉइंट की लोकेशन को देख सकते हैं. एक यहां है, एक यहां पर है. दोनों के लगभग 1 चुन का अंतर है, लेकिन दोनों पॉइंट एक लाइन में नहीं है. Because the urinary bladder meridian coming like this, then it's a turning on the side. Then it's going like this. Right? So this point is located 7 chun up from the 60, from the ankle joint. If we are going one more chun, then the 57. So upper is 57 and the lower is 58. 2 point है. Right? So in this way, we know this. Urinary bladder 57 and urinary bladder 58. A wonderful point. We just have seen. हमने अभी देखा. एक बार पुनः इन पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं इस इमेज के माध्यम से. Look at this image.
You can see the route of the urinary bladder meridian, how the urinary bladder meridian moving downward. First, it's going vertically, then turning on the side. So this is the location of bladder 60 and we are going 7 चुन up from here. हम bladder 60 से अगर 7 चुन ऊपर जाते हैं तो हमें मिलता है bladder 58 और bladder 57 यहां पर है, right? Now let's see once more time in the other image. एक बार हम पुनः एक दूसरी इमेज में देखेंगे. So in the calf, we are having muscle that is called gastrocnemius muscle. हमारे काफ में जो ऊपर की मसल होती है उसे हम gastrocnemius muscle कहते हैं. We can see this is the muscle, right? This is the muscle. We can see this is the muscle. And inside we are having another muscle. अंदर की ओर दूसरी मसल है जिसे हम soleus कहते हैं, soleus. And these are different muscle, soleus muscle. But the soleus muscle is very long. हम देख सकते हैं कि soleus muscle जिसे calf muscle भी कहते हैं, एक तो soleus है जो अंदर, और ऊपर कौन सी है? ऊपर है gastrocnemius. So the gastrocnemius muscle is the muscle located on the upper side. This is the gastrocnemius muscle. We can see where the gastrocnemius muscle is ending, where if we contract the gastrocnemius muscle, and we can see the end, that is the location of 57. ये हमारा urinary bladder 57. तो हम इस मसल को कॉन्ट्रैक्ट करके देख सकते हैं, क्लियरली दिख जाएगी. जो स्पॉटी होते हैं उनकी मसल तो दूर से दिखाई देती है, राइट? दिखती है आपके पैरों में, फिर होता है उसका लोअर बेली. एनीवन स्पॉटी? You are sporty. If you are sporty, if you do lots of walk, you run, then you can see the clear lower end. That is the 57. Wonderful point for hemorrhoid. Empirical point for hemorrhoid, empirical point for piles. Right. Yes. Okay. अब हम दूसरी बात कर लेते हैं. ये तो हमने बात की empirical point के बारे में. Now, we will see the excellent formula, the one formula for all. अब चिंता नहीं करना ये लगाओ कि वो लगाओ, कौन सा फॉर्मूला लगाओ. One formula for all type of piles. One formula for all types of piles और हेमरॉइड. चलिए बात करते हैं. So remember one thing, whenever someone is suffering with a piles, we know constipation is the one of the cause. Constipation. पेट साफ ना होना एक कारण है उसका. तो हमें क्या करना है? हमें उसके पेटों में हलचल पैदा करना, हमें उसकी आंतों में हलचल पैदा करनी है ताकि मल का त्याग प्रतिदिन हो और ठीक से हो. So we have to create the movement in the intestine. And we are having wonderful point, they are called foregate, which is the combination of Li4 and liver 3 bilateral. They're the very good points who create movement all around the body. The foregate or the point has been considered as a very good point who remove blockages, who remove stagnation.
of the chi, of the energy. तो आपने सबसे पहले, मालूम है आपको, LI4 नहीं दबाते कब? प्रेगनेंसी में. Why? Because it's create contraction in the uterus. But LI4 is not only doing the contraction in the uterus, even it's doing contraction in the intestine. LI4 is doing contraction in the whole body, and that's why it's creating the great movement all around. LI4 we are not using in the pregnancy. Why? Might cause abortion. हम LI4 का प्रेगनेंसी में प्रयोग नहीं करते. इसका ये एबॉर्शन करा सकता है. क्यों कराएगा एबॉर्शन? क्योंकि जैसे हमने LI4 लगाया, हमारे शरीर में आंधी तूफान की हलचल पैदा कर देता है, और उससे क्या होता है कि ब्लॉकेज निकल जाते हैं. लाइक वी नो, इफ वी वांट टू क्लीन द डस्ट, हमारी कभी खिड़कियों के किनारे किनारे में धूल फंस जाती है ना, तो ब्लोअर से, एयर से साफ करते हैं. वी क्लीन विद एयर. क्लीन और नॉट? एयर, द प्रेशर ऑफ एयर. Because if you want to clean by the hands, if you want to clean by the wet cloth, sometimes it's not possible. But with the air pressure, we can remove each and every dust particle. LI4 is the same point. Who start moving air throughout the body, start moving chi throughout the body. That's why LI4 is the great painkiller point. Why it is the great painkiller point? Because the meaning of pain is energy stagnation. ऊर्जा का अटकना ही दर्द है. ऊर्जा अगर बहती रहे, किसी हड्डी के 15 टुकड़े हो जाए, आपके शरीर के 15 टुकड़े हो जाए, लेकिन ऊर्जा का स्टैग्नेशन ना हो तो दर्द नहीं होगा. The cause of the pain is stagnation of the energies. That's why even without the accident, if energy is blocked, you might suffer with the pain. Pain means blockage. So LI4 is creating the movement all around. So the combination of LI4, like here we have LI4, same liver 3. If you go in the leg, great toe, then index toe, liver 3. एकदम यही तो मिरर इमेज है लिवर 3 की, है कि नहीं? LI4 और liver 3 मिरर जैसे लगते हैं कि नहीं लगते? Both looks like mirror or not? You can see in this image. Like the LI4 is located in the hand, and liver 3 is located in the feet, in the same imaging place. Let's see this. ये हमारा LI4 है. कहां पर है? अंगूठा और इंडेक्स फिंगर के बीच की जगह में है. At the middle part of the thumb and index finger area, or we can tell in between the first and second finger. अगर thumb को हम पहली उंगली माने, index finger को दूसरी उंगली माने, so we can tell this is the first finger and this is the second finger. That's why we are telling third, fourth and fifth. How many fingers we have? We have 5 fingers. In the same way we are going in the leg. अगर हम पैरों में जाते हैं, if we are going in the leg, now the location of liver 3 is also the same between the first and second toe. Exactly mirror image. तो जब भी हम दोनों पॉइंट्स को लगा देते हैं, हमारे शरीर में तीव्र गति से आंधी तूफान चलने लगता है. सारे ब्लॉकेज निकल जाते हैं. जैसे आपने हवा का ब्लोअर चालू कर दिया, they will remove all the blockages, they will clean the stagnation, they will clear the liver chi stagnation, they will clear the emotional stagnation, all the stagnation. That's why they are called foregate. And we know foregate also we are using in the acute injury. कभी हम गिर गए, पड़ गए, चोट लग गई, दर्द हो रहा है, foregate 4 पॉइंट लगा दो, दर्द गायब immediately within few minutes. So first we are starting the treatment with the foregate. If we are using the foregate every day, even our motion will be clear, right? Even we will be sitting on the toilet seat, not getting a stool, we can start pressing this LI4.
start pressing this on the, then we will be getting the evacuation, then we can expel the stool very clearly. So this was the starting of the treatment. The second point, the root cause of all types of the piles is constipation. Constipation, या बोलिए कि मल में कुछ मल मार्ग में तकलीफ है. The constipation is the cause. So first we have taken forgate, remove blockages and stagnation of the chi. Now the second cause we can consider again the constipation. So how to release the constipation? We will be using 666 formula, the 666 formula of constipation. अब हमने किया ट्रिपल वार्मर 6, spleen 6, kidney 6. These 3 points are the wonderful point for constipation. The triple warmer 6 is the empirical point for constipation. ये सदियों से प्रयोग किया जाने वाला constipation का बेहतरीन point है. The kidney 6 is the point of rectum. Point of rectum also clear the stool. And spleen 6 also is doing the nourishment and lubrication. Nourishment and lubrication in the intestine, so clear the stool. ये तीनों पॉइंट का जो कॉम्बिनेशन है बड़ा गजब का है. आप बायलैटरल प्रयोग कर सकते हो. तीनों पॉइंट, ट्रिपल वार्मर 6, spleen 6 and the kidney 6. Wonderful point combination. Those who are suffering with the constipation, they can use these points for a few days and they will be seeing very wonderful results. So look at the kidney 6 point. The kidney 6 point is really very wonderful point. Look at it below the medial malleolus. हमारी malleolus से एक चुन नीचे होता है, ये rectum का point है. ये हमारे मलाशय का बिंदु है. We can see it's directly below the medial malleolus. That is the location of kidney 6. We can see this is the point. So this is the medial malleolus. From here, if we are going one chun down, so this is the location of kidney 6. If the person is having constipation, many times because of the dryness in the intestine, we can put the black color here, just a black color. So by putting the black color here, we are tonifying the kidney, we are nourishing the kidney. The kidney 6 and the spleen 6 combination is very good for nourishment. They are increasing the fluid. They are increasing the fluid and removing the dryness. ये हमारी आंतों में पानी की मात्रा बढ़ाते हैं और ड्राइनेस को हटाते हैं. और ये आंतों में नहीं, हर जगह. घुटने में पानी कम हो गया है, घुटने में लिक्विड कम हो गया है, किडनी 6 स्प्लीन 6. गले में से सूखी खांसी आ रही है, किडनी 6 स्प्लीन 6 गले को गीला कर देगी, कफ गीला होकर निकल जाएगा. नाक में कफ फंस गया, बॉडी के किसी भी भाग में कफ, बॉडी के किसी भी भाग में आपको लुब्रिकेशन करना है, नरिशमेंट करना है, ड्राइनेस को दूर करना है, किडनी 6 स्प्लीन 6. whenever you want to do the nourishment, when you want to lubricate any part of the body, just use the kidney 6 spleen 6. They will start producing fluid which is necessary for the human body. तो किडनी 6 और स्प्लीन 6 के माध्यम से हमने शरीर में पानी की मात्रा में वृद्धि की. पानी की मात्रा कर दे, आंतों में हमने थोड़ा सा लुब्रिकेशन पैदा किया, ड्राइनेस को कम किया, तो कॉन्स्टिपेशन रिलीज होना चालू हो जाएगा. सो दिस इज पॉइंट नंबर 1, दैट इज किडनी 6, एंड द पॉइंट नंबर 2, दैट इज स्प्लीन 6. And spleen is located 3 chun above from the medial malleolus. हमारे medial malleolus से ये 3 चुन ऊपर होता है. ये बड़ा गजब का पॉइंट है क्योंकि हमारे पैरों के तीनों ये मेरिडियन
यहाँ पर मिलते हैं, we can measure the three chin by the help of forefinger. So this is the location of spleen 6 on the border of tibia bone. हमारे tibia bone के border पर होता है spleen 6, right? Spleen 6 has been considered as a distal point of the pelvis. ये जो pelvis है, this pelvis, this pelvic area, spleen 6 is the distal point. So the rectum also coming in this area. That's why spleen 6 become a wonderful point for constipation. And the third point is triple Werner 6. So kidney 6, spleen 6, and the triple Werner 6. ट्रिपल वर्मर 6 तो अकेला सिंगल ऐसा पॉइंट है जो कॉन्स्टिपेशन को दूर करने की ताकत रखता है. Only this single point having capability to work for constipation. The triple Werner 6 is the empirical point for the constipation. हमने कई बार यहाँ पर ट्रीटमेंट दिया है एक, और हमने देखा है बड़ा गजब का फायदा मिलता है. लेट्स सी द लोकेशन ऑफ ट्रिपल Werner 6. So we can see this is the point, triple Werner 6 from the dorsal wrist crease. We are going to chin proximal. हमारी कलाई के क्रीज से हम 2 चुन और ऊपर जाते हैं तो हमें बीचों बीच मिल जाता है ट्रिपल Werner 6. Triple Werner 6 is not only clearing the stool, triple Werner 6 is clearing all types of the energy stagnation. हमारे शरीर में होने वाली हर प्रकार की ऊर्जा की रुकावट को दूर करते हैं. इसीलिए आप देखिए emotional stagnation, anger, irritability, any type of the stagnation, we always can use triple Werner 6. Right now we are using for the stagnation of a stool. अभी हम stool के stagnation use कर रहे हैं. तो हमारे 3 पॉइंट हो. We have taken the 3 point. Triple Werner 6, spleen 6, and kidney 6. So Li for liver 3, then these 3 points, right? So till now we have worked very nicely for the rectal part, for the constipation, which is the root cause of the problem. अब चलिए अब हम ऐड करते हैं हमारे empirical point. अभी हमने बात कही थी आपसे. The empirical point, let's add the empirical. Of hemorrhoid. तो हमने ऐड कर दिया urinary bladder 57 and urinary bladder 58. इतना ऐड किया. Okay. Now, so this is the step number 1. Step number 1, right? Now the step number 2, we have to add few more points. We have covered the step number 1. Even this step is very wonderful. अब हम step number 2 की तरफ जाएंगे. So step number 1, Li for liver 3, all the point will be bilateral. Triple Werner 6, kidney 6, spleen 6, all the point will be bilateral. Urinary bladder 57 and urinary bladder 58, bilateral. अगर आप जानना चाहते हैं टर्न करना है कि सेडिट करना है, I will suggest you do the even method. Because suppose some old person is suffering with a hemorrhoid, and if some person is having too much weakness in the body, it's very risky to sedate the point. Point को sedate करना risky होगा, ऊर्जा बहुत छीण हो जाएगी, कम हो जाएगी. Now the step number 2. In the step number 2, let's add a few more points of the kidney. चलिए हम किडनी के कुछ और पॉइंट ऐड करते हैं. Because the root cause of the piles, the area of the anus, all the 3 holes are connected with kidney. आप चाहे मल मार्ग की बात करें,
चाहे मूत्र मार्ग की बात करें और चाहे जेनिटल पाथ की बात करें, all the three routes are connected with kidney. So now we will be focusing a little more on the kidney points, right? So I will show you few points here. Look at here. We already have seen the location of kidney 6. हमने अभी अभी kidney 6 की लोकेशन को देखा. I am repeating again. So we have seen the location of kidney 6 here. This is the kidney 6. This entire area is very important area for the person suffering with the piles, right? Now, generally I am suggesting do the massage in this area, in the entire area, do the massage in this entire area. And then add a few more points. The point number 1, we already have taken kidney 6, right? Then before that we have kidney 5. Then before that we have kidney 4. Add all the 3 points or massage all the 3. Then if we are going up, we are having here kidney 7. At least you have to add these 4 points. और you have to massage these all point. आपको ये सारे point या तो massage करने होंगे या उनको treat करना होगा. I will tell you. These points will be very painful. Even if you touch, these points will be painful. These points are painful in many conditions. The condition number 1, if the person is suffering with the piles. The condition number 2, if the person is suffering with the problem of the prostate in the male and problem of the uterus in the female. And these points will be painful if someone is suffering with a urinary problem. So we can see anal hole, genital hole, and the urinary hole. All the 3 are controlled by kidney, and we can use these points for all the 3 problems. हम इन सभी problems के लिए इन बिंदुओं का प्रयोग कर सकते हैं. पाइल्स में भी इन पॉइंट को आप टच करोगे तो दर्द मिलेगा. प्रोस्टेट वाले भी जरा सा भी टच किया तो वो चीखेंगे कि छोड़ दो. यूट्रस में फाइब्रॉइड होगा तो भी प्रॉब्लम होगी और यूरिन की प्रॉब्लम होगी तो भी होगी. इन सारी कंडीशन में हमें इन पॉइंट को स्टिमुलेट करना है. वी नीड टू स्टिमुलेट दीज ऑल द पॉइंट्स, राइट? देयर आर द वेरी वंडरफुल पॉइंट्स, ऑल द पॉइंट्स. सो वुड लाइक टू शो यू वन द लोकेशन ऑफ किडनी 5. The kidney 5 is one of the great points. I will show you here. So kidney 5, we can see here. Look at here. This is the medial malleolus. The kidney 6 is here. And the same line kidney 5. So the kidney meridian is like this. Kidney meridian हमारा इस तरह से होता है. So kidney 5 and the kidney 6 is at the same level. Why the kidney 5 is good? Because kidney 5 is medical emergency. Or it is called G cleft. अगर किसी को पाइल्स की प्रॉब्लम है, यूट्रस की प्रॉब्लम है, आप बस टच करके देख लेना, सामने वाले व्यक्ति को बड़ा दर्द होगा. Person will be having great pain here. And just by doing the massage on this point, within few days,
you can see the significant improvement. Now let's move to the next, that is kidney 4. अब किडनी 4 की बात कर लेते हैं. So look at the location of kidney 4. अब kidney 4 थोड़ा ऑब्लिक है, पीछे है. I will do the comparison of all the points together. You will able to understand. Like see, kidney 3 and kidney 5 in the same line, but kidney 4 is going little back. ये हमारा kidney 5 था, ये हमारा kidney 3 है. We can see the kidney 3 and kidney 5 in the same line, but kidney 4 is going back. This is the kidney 4. ये सारे पॉइंट गजब के हैं. All the points are really wonderful. So this is the location of kidney 3. And this is the location of kidney 5. The distance is 1 chun. And kidney 6 also 1 chun. But the kidney 4 is, we can see on the little back side, that is kidney 4. Kidney 4 is also a very good point. It is Leo connecting. Leo connecting. Kidney 5 is the medical emergency point, which is called G cleft. But kidney 4 is the Leo connecting point. Why the Leo connecting point are good? Because the meaning of Leo connecting point, they are having bypass route. They can make the bypass route. With the partner channel means urinary bladder channel. They can exchange the energies. They can take the energy. They can give back the energies. They can exchange the energies. This is the power of Leo connecting point. तो लियो कनेक्टिंग पॉइंट क्या करते हैं? ये ऊर्जा का आदान प्रदान कर सकते हैं. तो हमने देखा जब हम किडनी 4 को लगाएंगे, किडनी 5 को लगाएंगे, किडनी 6 को लगा देंगे और ऊपर किडनी 7 को भी लगा देंगे. किडनी 7 इज 2 चुना. Kidney 7. From the kidney 3, from the medial malleolus, we are going to tune up. The kidney 7 is very good point because kidney 7 is the mother point. In the 5 element cycle, we know kidney 7 is the mother point. So we have added few more points of the kidney. Kidney 4, kidney 5, kidney 6 is already there, and kidney 7. We are taking multiple points of the kidney. If we want to work on the hemorrhoid, we can take bilateral. Or at least you massage them every day. Or you can do the gua sha. कुछ ना मिले 5 रुपए का सिक्का लीजिए और हल्का यहाँ पर ऑयल लगा के इसकी पॉइंट की घिसाई करिए. इन सारे पॉइंट की घिसाई करिए. Okay, now step number 3. Remember one thing, whenever we're talking about the piles, sometimes it might be bleeding piles. We have to cool it down. We are always taking the help when we're talking about the piles. We always take few points of the gallbladder, like gallbladder 38, the fire point of the gallbladder, gallbladder 43, the water point of the gallbladder. We take these 2 points. We balance the fire and water to arrest the bleeding or to balance the area, because gallbladder is connected with the muscles. Gallbladder is having connection with the joints. Most of the time, we see sometimes person is having dry piles, but after some time is getting the bleeding piles. But if we are applying the gallbladder 38 and the gallbladder 43, there is no further chances to get the bleeding piles. अगर हम इन दोनों को लगा देते हैं तो bleeding piles होने की संभावनाएं 0 हो जाती है. The gallbladder 43, I already told you in the previous class, it is a wonderful point, water point. It is a cooling point.
ये बहुत ही कूल करता है, इसीलिए वी अवॉइड दिस पॉइंट इफ द पर्सन ऑलरेडी इज सफरिंग विद कफ एंड कोल्ड, बिकॉज दिस पॉइंट इज कूलिंग पॉइंट 43, द वाटर पॉइंट ऑफ द गॉल ब्लैडर। और इसमें हम एक पॉइंट और भी ऐड कर देते हैं, गॉल ब्लैडर 34, गॉल ब्लैडर 34 इज अ वेरी गुड पॉइंट। हु काम डाउन, गॉल ब्लैडर 34, हु काम डाउन the entire gallbladder area. If the person is suffering, if the person is suffering with the piles, then we can improve the surrounding structures, muscles, ligaments, tendon by applying these point. ये हमारा स्टेप नंबर 3 है कि हम गॉलब्लैडर के पॉइंट लेते हैं। Now step number 4, raise and lift, because the person is taking lots of medicines for clearing the stool. Slowly and slowly intestine become weak. In the future, person might suffer with the prolapse of the rectum, anus is coming out, rectum is coming out. तो क्या होता है कि व्यक्ति को, जब व्यक्ति लंबे समय तक दवाइयों का सेवन करता है, आंतें कमजोर हो जाती हैं और कभी कभी प्रोलैप्स हो जाता है। तो उसे रोकने के लिए, उसे मिटाने के लिए, सेकंड, व्हाट इज द हेमरॉइड, व्हाट इज द पाइल्स? द हेमरॉइड और पाइल्स कैन बी कंसीडर्ड द बल्जिंग ऑफ द वेन, जब उसकी वेन फूल जाती है, बल्ज हो जाती है, जैसे कि बैरिकोज वेन, हम पैरों में बैरिकोज वेन देखते हैं, वैसे ही जब एनस के पास हो जाता है तो उसे पाइल्स कहते हैं, हेमरॉइड कहते हैं। वी आर टेलिंग दैट हेमरॉइड। सो व्हाट टू डू? we have to raise the chi so that the blood is stored in the veins, can be sent upward. जैसे वेरिकोज वेन होती है ना, तो ब्लड ऊपर नहीं जा पाता, नीचे भरा रह जाता है, उसी तरह से पाइल्स में जो वेन फूल जाती है, उनका ब्लड ऊपर नहीं जा पाता। तो क्या करना है हमें कि उन वेन का ब्लड ऊपर जाए, इसके लिए ऊर्जा को रेज करना है। सो नाउ द स्टेप नंबर 4, रेज द chi up, raise the chi up. Purpose number 1, to send the blood which is hanging in the veins. पहला पर्पज है कि ब्लड को ऊपर भेजना जो ब्लड वेसल्स में लटका हुआ है। दूसरा पर्पज है कि प्रोलैप्स को रोकना। सो वी आर हैविंग CV1, CV6, गवर्निंग वेसल 1, गवर्निंग वेसल 20, टॉन और मोक्सा, दे आर द वंडरफुल पॉइंट टू रेज द chi अप। इन पॉइंट का प्रयोग करके हम ऊर्जा को ऊपर की तरफ रेज कर सकते हैं। ये हमारा पूरा प्रोटोकॉल तैयार हो गया। आई वुड लाइक टू एड वन मोर पॉइंट हियर। I would like to step number 5. Suppose someone is suffering with the piles for a longer time. If the person is suffering with the piles for the longer time, there is chances to suffer with the colon cancer in the future. Suppose someone is having constipation for 5 years or the 10 years, right? अगर किसी व्यक्ति को 10 साल 15 साल आंतों में इन्फेक्शन बना रहे, इन्फ्लेमेशन बना रहे, एक संभावना है कहीं कैंसर ना हो जाए, होगा नहीं पर हो सकता है। So to avoid that condition, we are taking Dr. Bol point, that is called organ degeneration 1 and organ degeneration 1C. हम 2 पॉइंट ले लेते हैं। I will tell you the location of these 2 points. So we are taking only 2 points. Organ degeneration point we are taking for deep lymphatic cleansing. Deep lymphatic cleansing. हमारे बिल्कुल अंदर से गंदगी को साफ करने के लिए हम ऑर्गन डिजेनरेशन पॉइंट का प्रयोग करते हैं। हम जानते हैं कि 2 प्रकार के डॉक्टर बोल ने मेरिडियन दिए, एक तो लिम्फेटिक मेरिडियन जो लिम्फ की क्लींजिंग करते हैं, और जो डीपर लिम्फ की क्लींजिंग करते हैं वो है ऑर्गन डिजेनरेशन मेरिडियन। कैंसर तक की में वो हम देते हैं। सो वी विल बी टेकिंग 2 पॉइंट। Organ degeneration meridian located in the ring finger, right? It's located in the ring finger. So look at here. In the ring finger, this point is, I will show you in the image first. Look at here. So OR1
is for the lower part of the body, like the rectum area, and we are taking OR1C 2 point. इसके साथ ही हमारे प्रोटोकॉल कंप्लीट हो जाएगा. We have covered everything from all the aspects. So look at here. So this is the very wonderful protocol. Okay, and now I will show you. Yeah, look at here. So we can see this is the ring finger. And we know the doctor ball point are on the side. On the side, we have organ degeneration meridian on the side, right? हमारे साइड में ऑर्गन डिजनरेशन कहां पर है, कौन सी उंगली में है बताइए. इन विच फिंगर? इन विच फिंगर वी हैव ऑर्गन डिजनरेशन? टेल मी, कौन सी उंगली में है? रिंग फिंगर में. रिंग फिंगर में किधर की तरफ? कहां पर है रिंग फिंगर? Where it located in the ring finger? Tell me. In the ring finger, the organ, because on the small finger side, we have triple baromeridian, right? स्मॉल फिंगर साइड पर तो ट्रिपल बारोमेरिडियन है कि नहीं, राइट ना? तो कौन सी साइड बची? मिडिल फिंगर साइड. Only the middle finger side is left, right? Because on the one side we already have triple baromeridian. So now, if you see the ring finger, so this is the location of organ degeneration meridian. On the side. So the uppermost point on the corner of nail, that is OR1, doing the lymphatic cleansing. Then this is the joint. This is also the joint. Then here we are having one more point that is called OR1C. हम दो पॉइंट लगाते हैं. हम इसमें CMP पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं. We also can add CMP point. That is OR1V, because CMP point can be added for any problem. OR1, OR1C can be added OR1V. Now we have avoided all the future unhappenings. So what is the final protocol? What is the final? Let's see the final out. अब हम फाइनली बात करते हैं. सारे स्टेप को मिलाकर एक प्रोटोकॉल का निर्माण होगा जो बहुत ही बेहतरीन प्रोटोकॉल. एक्सीलेंट. स्टेप नंबर 1, Li4 liver 3. Triple wormer 6, kidney 6, spleen 6, urinary bladder 57 and 58. Step number 2, we have taken more point of kidney. Kidney 4, kidney 5, kidney 7. Step number 3,
We have taken the point of gallbladder. Gallbladder 38 is the fire point of the gallbladder. Gallbladder 43 is the water point of the gallbladder. Gallbladder 34, influential point, and there are many more things. Step number 4, raising the chi up. CB1, CB6, governing vessel 1, governing vessel 20. And the step number final, OR1, OR1C, and OR1. बस इतना याद रखिए, बाकी सब भूल जाइए तो भी चलेगा. This is a wonderful protocol for hemorrhoid and all the other problems which is associated with the hemorrhoid, like the bleeding, like the constipation, the pain in the buttock area or the pain around. We have to do the treatment on all the points. If you are thinking that too many points, you can make the batches. In the first sitting, you can choose step number 1, 2. In the next sitting, you can take the step number 3, 4 in this way. सारे पॉइंट हमें यूज करना होंगे आगे पीछे, मतलब हमें एक या दो सिटिंग में. इज इट क्लियर? दिस प्रोटोकॉल इज एंटायर प्रोटोकॉल इज क्लियर, इजी ना? You can apply this. Got it? Wonderful. Okay, fine. Actually, I will tell you, we are not in the favor of sedation because many old person coming with the problem of hemorrhoid, even many person who are very lean, very thin, very big, very having less of nourishment in the body. So we do even method. हम even method करते. आई एम टेलिंग यंग पर्सन की बात मैं कर रहा हूँ. एक यंग पर्सन है, 22 साल का लड़का, ड्राइविंग करता है 2-3 सालों से, एकदम लकड़ी का झाड़, उसको सेडेशन का सोच भी नहीं सकते. We even can't think about the sedation. मुंह में पुड़िया. The points will work in the sujok definitely. There is no doubt. Sujok is very effective, right? There is no doubt point will be working. Bleeding is there. So many times bleeding because of the weakness of the spleen. Then we have to tonify. Yes. Remember one thing. In the next class, we will be discussing. There are 2 causes of the hemorrhoid. Number 1, deficiency. Number 2, excessive heat. हेमरॉइड के 2 कारण हो सकते हैं. पहला कारण हो सकता है कि कमजोरी, स्प्लीन कमजोर होगी, आपको टॉन करना पड़ेगा. यू हैव टू टॉन ऑल द पॉइंट्स टू अवॉइड द ब्लीडिंग, टू रिस्ट्रिक्ट द ब्लीडिंग. द कॉज नंबर 2, एक्सेसिव हीट. गर्मी बढ़ गई बहुत ज्यादा, तो क्या करना? सेडेट करना पड़ेगा बस. तो हमें पहचानना पड़ेगा, बस हमें पहचानना है. हम पहचान लेंगे, आसान है पहचानना. We will see the symptoms of the spleen deficiency. We will see the symptom of the heat. We can see the tongue. Just we will differentiate. Okay, this is the deficient pattern of the spleen, or this is the deficient or the excessive pattern of the heat. पहचान जाएंगे हम देखकर कि क्या कमजोरी है, थकान है, टायर्डनेस है, खाना पचता नहीं, पेट फूलता है, स्प्लीन की कमजोरी है, या गर्मी ज्यादा है, जीभ पर पीले रंग की कोटिंग है, गर्मी बढ़ी हुई है. लक्षणों को देखकर हम पता कर लेंगे. ये फॉर्मूला हमने जो डिस्कस किया, ये तो दोनों पे काम है, लेकिन वो लक्षणों को देखकर फिर हम और भी सोच सकते हैं कि भाई टॉन करो कि सेडेट करो. अदरवाइज टॉनिफिकेशन सेडेशन
एक ऐसा मैटर है जो वेरी करेगा पर्सन टू पर्सन, राइट? क्लियर? एक फिक्स फॉर्मूला हम नहीं कह सकते कि आप टर्न करो सारे, राइट? ब्लैक पेपर, black pepper, not only black pepper is not tonifying. Black pepper is good because in the black pepper we are having many wrinkles. So wrinkle means there is a more place for energy. Like in the brain we have suture. Why we have, not the suture, in the brain we have gyrus, the multiple like this gyrus sulci in the brain. Brain is having multifold inside, so that energy, the surface area will increase. In the same way, the black pepper is having too many wrinkles, so having good energies, but we can't tell it will do the tonification or it will do the sedation. It is a neutral. Yeah. Black pepper is good for eyes. You can put on the point of eyes. Done? See you on Monday. Bye-bye. See you on Monday. Thank you so much. Good night.